Good morning, everyone. I hope I'm clearly audible and visible. Please write yes in the chat if you can hear me and see me clearly. Thank you, Manish and Imranji, for the confirmation. We will start the session soon. We're just waiting for Madhu sir to join in, and then we are good to go. Thanks, Jayashri, for the confirmation. Today we have our Nifty expiry with our expert, Miss Shivangi Sharda, at 2:30 p.m. So don't forget to join that, as well as the 11:30 morning session with our expert, Mr. Ruchit Jain. So these are the two sessions that are going to happen today. Commodity sessions will be announced soon. The dates are here. We will be scheduling them, and uske baad mein we will be announcing it. I can see more people are joining. And so, guys, for the morning session, you have to, probably ask the stocks which are in your portfolio, because the morning session focuses more around the equity pipe. We'll start with the market outlook, index, strikes, support and resistance, everything. And then we're going to hop towards the stocks. So we'll share some stocks on radar, probably some intraday or CDA trades, and then we'll take up some stock queries. You can start dropping your stock queries right now, guys. We will be taking it as first come first serve basis, and please don't spam your queries. अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही क्वेरी 20 में डालेंगे तो आपकी क्वेरी पहली ली जाएगी. Zomato, NGC, Suzlon. We'll take all these queries up, guys. I just had a word with Madhu sir. He's joining us in a minute. Standard class IPO allotment कब है sir? Please view on UPL for intraday. So guys, next week we have a knowledge session. जो मैं बोल रहा था आपको इस हफ्ते होगा, वो इस हफ्ते नहीं, वो नेक्स्ट फ्राइडे है. Either it will be on option strategies or derivatives 101. We'll update you as soon as possible. Probably by tomorrow we'll have some confirmation. If there's any other topic that you want us to plan a session on, feel free to drop it on Stockholm, and we'll be happy to plan it and see who's the right expert for it, and then we can move on from there. Sale today, UPL, Zomato. Madhu sir, I hope you can hear me and see me clearly. Anuj, yes. Great, we can hear you. We are all set, sir. You can turn on your camera and share the screen, and then we are good to go. Just give me 1 minute. Sure, sir. Your screen is visible. Sir, you're on mute if you're speaking something, but we can see your screen. Yes, sir, you are visible, your screen is visible, and you're clearly audible, and we are good to go. Yeah, very good morning, everyone. Welcome back to the morning session. So, volatility continue on the Dalal Street, right?
Yesterday we have seen massive volatility in the Nifty and Bank Nifty as well. Right. In morning, first half of the session, Nifty was tested a low of around 23,500. In last 1 to 2 hours, it's recovered from the 23,500 to and close at around 23 688 level, right? So much volatility in the market. If you remember, in last week we had discussed that India VIX, right? India VIX on an average basis is up by nearly 22% in every January in last 10 years. Each of the last 10 year in January, India is up by nearly 22%. And we have seen that in last couple of days that Nifty is doing quite volatile movement, right? So let's talk about the yesterday's session first. In first half of the session, Nifty tested levels 23,500, and in last 1 to 2 hours, we have seen a steep recovery of more than 230 points, right? But the problem है कि ऊपर में जो level है इसका 23,800 23,750 Nifty is unable to cross that level. So it formed a small body candle on the long with a longer lower shadow, which clearly indicate that support based buying at the lower zone, but the absence of follow buying is not there in the market, right? It's holding near its 200 dema, but from last almost 8 to 10 trading session, Nifty is holding its 200 dema, but concrete कोई इसमें नहीं हो रहा है यहाँ पर, right? Again, today's we have the Nifty's weekly expiry, and Nifty is trading below its weekly VWAP, almost more than 100 120 point. It's from weekly VWAP. So the bias is slightly negative, though we have seen some follow-up buying at the lower zone, but still we have some slight negative bias because market is doing sell on rise in last so many session, right? So talking about the support, 23,500 is a strong support for the Nifty as of now, 23,500 and then 23,300 zone, while upside hurdle is seen at 23,800. Before that 23,700, right? We can see it, the doji's highs around 23,800. So 23,700 and 23,800 is the resistance for the Nifty. Once the Nifty close above 23,800, we can see some bounce back in the Nifty towards 24,000, 24,100 zone. So 23,700, 23,800 are the immediate hurdles. And नीचे में अगर मैं बात करूँ तो 23,500, 23,400 are the immediate support for the Nifty, with the view slightly negative. Now let's talk the Bank Nifty. Bank Nifty from last so many session was taking a support at 200 DEMA, but 3 days back, it breached 200 DEMA and closed below that. So Bank Nifty is more weak than the Nifty. Looking at the chart, forming a higher lower lows, lower highs in the daily chart as well, right? You can see on the chart, Bank Nifty also breaches the important support level yesterday, though it's not close below that, because you can see on the trend line from last almost from August onward, it took support on the trend line for 2 to 3 times. Yesterday, it goes below down that, but didn't close below that. So as of now, hovering near the same. If I अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो that comes around 49,600. अभी उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है. बैंक निफ्टी इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो वी कैन सी सम मोर पेन इन द बैंक निफ्टी ऑफ मोर देन 1,500 पॉइंट इन द बैंक निफ्टी, right? So on immediate basis, bank nifty supports seen at 49,300 level, then 49,000. So 49,300 and then 49,000, and upside hurdles are seen at, because अगर मैं chart पे देखूं तो the first hurdle is coming around 50,000 and then 50,400, 50,500 zone. Even the 200 demo is around 50,000, 450, 460 level. So the bank nifty immediate hurdle at the 50,000 and then 50,400 zone, while the support is seen at 49,300 and then 49,000. But again, the bias is negative only. We are going with the still on bounce in the bank nifty as well, right? If I talk about some stock specific action, we have seen some good action in the Nifty oil and gas, whether it is a ONGC or a Reliance. Reliance doing quite well, even the sell off in the market. If I check on the Reliance daily chart, I seen some good quite action in the Reliance.
if Reliance stood here only, so we can see some good up move in the Reliance more than 3 to 4%, right? Today we have seen some good action in the chemical space, whether it's a Navin Fluorine or SRF or a PI Industries. Some update was there on the chemical stock. I guess some price rise in the chemical prices, and that's why the SRF is trading at the upper circuit. Even the Navin Fluorine is trading at the upper circuit, and all other chemical stocks are doing very nice. So one stock from the chemical stocks look good for the intraday as well as a PI Industries. Right now trading at the 3710 with a stop loss of 3675. ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 3750 के टारगेट आना चाहिए इसमें. So PI indices look good as of now, up by more than 2%. We can buy at the CMP for the intraday purpose. Stop loss will be 3675. ऊपर में हमें लग रहा है कि 3750 तक के टारगेट इसमें आना चाहिए. यहाँ से 30-40 पॉइंट का मोमेंटम आना चाहिए. Sir, I'm just repeating the trade. Intraday PI Industries buying at 3710, stop loss 3675, target 3750. Right, Anuj, right. Sir, Nifty strikes on radar. Yeah, sure. तो अगर निफ्टी की बात करूं तो the strikes on the radar, that is the 23,650 put and 23,700 put. दोनों strikes radar पर है. 23,650 का put and 23,700 का put. 23,650 का put as of now 85 के आसपास ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है and 23,700 का put around 130 है अभी. These strikes on the radar. Twenty-three 650 put and 23,700 put on radar. Yes, yes. Even we can initiate bear put spread as well. In meantime, I will share the strikes for the bear put spread because it's better to go with the strategy rather than go with the naked put, right? Because there is so much volatility in the market. Right, Nifty is back to day low, almost day low. Yes, Anuj, in the meantime, we can take some of the quiz now. Sure, sir. The first one is Zomato at 300. Zomato. Bought at 300. Okay. So if you bought for the trading purpose, then you can keep the stop loss of 240. But if you bought for the long-term purpose, you can average out around 230, 240 level. Right, 240 is the immediate support. If that breach, तो थोड़ा सा और पेन देख सकता है. तो ओवरऑल सेटअप वाइज काफी अच्छा है. थोड़ा सा इस पे ब्रोकर्स ने डाउनग्रेड किया था, इसलिए स्टॉक इज डाउन बाय more than 8 to 10% from the upper levels. Keep the level on your radar. अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 240 के नीचे अगर आता है तो you can exit. But if you taken for the long term purpose, you can buy more at around 230 240 level. After a quite almost 280 level, seen some sideways movement. थोड़ा सा यहाँ पे sideways momentum हो सकता है for next 1 to 2 days. Better to avoid for the intraday. Good अगर ये नीचे आता है थोड़ा सा around 260 के आसपास,
गो फॉर द बाय फॉर द डिलीवरी अराउंड 260 का सब बाय कर सकते हो। ऊपर में आपको 280 290 का टारगेट देखने मिल सकता है इसमें। Sir, your view on UPL for intraday? यूपीएल, Yes, sir. so as I said, we are seeing some good action in the chemical space, so you can go for the यूपीएल as well. एक यहाँ पर भी रेंज ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। ऊपर में एक आपको 15 से 20 पॉइंट का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। सेटअप वाइज काफी अच्छा है, इनसाइड बार बना था, इनसाइड बार का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आ रहा है एंड विथ सीन के केमिकल स्पेस में अच्छा एक्शन है। Sir, sale today? The overall metal space is in downtrend and it's better to avoid such kind of stocks which are in downtrend, right? And वैसे भी सेल का मोमेंटम होता है वो काफी लैकलस्टर होता है। इवन यू गो फॉर द इंट्राडे, उसका मोमेंटम बहुत स्लो एंड स्टेडी होता है। इट्स बेटर टू अवॉइड। Hariom pipe view target? As seeing on the weekly chart, stock is forming a lower low, lower high from the last almost 11 to 12 weeks, right? It's coming its near support zone around 450. So as of now, setup wise तो काफी weak है यहाँ पर, but अगर support के आसपास आता है तो try to buy around 450 470 level. ऊपर में अगर ये यहाँ पर support लेता है तो ऊपर में आपको 500 के टारगेट देखने मिलेंगे, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पर हम बाय की सलाह नहीं करेंगे। Sir, Lal Path Lab for 3 to 4 days? Last week, we have seen some good action in the healthcare companies, Metropolis, Lab, Thyrocare, Vijaya Diagnostic. But in last 2 days, थोड़ा सा profit booking देखने मिला है. So stock is near its 200 DEMA. You can buy around 2950. 2950 के आसपास अगर buy होता है तो you can keep for the target of 3000. Tata Motors for 4 to 5 days? सो टाटा मोटर्स सपोर्ट से काफी अच्छा घूमा है नीचे के लेवल से, 3 4 ट्रेडिंग सेशन से कंसिडर है तो यू कैन बाय टाटा मोटर्स इवन एट द करंट मार्केट प्राइस। ऊपर में आपको स्लो एंड स्टेडी जो इसका अपसाइड टारगेट है, शायद एक 810 820 तक का टारगेट इसमें आना चाहिए 3 4 दिनों में। Sir, Wari Industries? So Wari Renewables Energies, it recently listed IPO, right? And it's coming, it's near सपोर्ट जोन। लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है, 2500 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पर आप बाय कर सकते हो एंड कीप फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ऊपर में आपको 3200 के टारगेट इसमें मिलेंगे। Chennai Petro? स्टॉक इज इन डाउन ट्रेंड, सो बेटर टू अवॉइड। अगर किसी को if I talk about the support and level, resistance level, the support is around 550 and strong resistance is seen at 700. The stock is in trading in the range, right? So try to buy around support and try to exit near resistance zone. But overall कोई खास momentum नहीं है इसमें।
So review on SBI. See, SBI today made a low around 727 and back to 770 level. So SBI का अगर weekly structure भी देखे तो support के आसपास है, right? It's had a strong support around 730 zone, वहीं से घूमा है आज, right? So try to buy around 750 level, थोड़ा सा dip में अगर buy कर सकते हो, यहाँ पे लग रहा है हमें कि ऊपर के एक momentum आना चाहिए towards 800 zone. So TCS. Forming a low top, lower bottom on a daily structure from last almost 15 to 20 trading session, though we are seeing some recovery from the lower levels as well. So overall setup थोड़ा सा यहाँ पे वीक लग रहा है अभी भी हमें. सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 3,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से एक बाउंस बैक हमें देखने मिला था, और कल अगर लोग की बात करें तो 4,000 के आसपास अगर एक मोर अच्छा सपोर्ट है, तो ट्राई टू बाय अराउंड सपोर्ट लेवल, राइट. 4,000 3,900 का एक जोन है, वहीं से घूरा है हर बार. यू कैन बाय अराउंड 3,900 एंड 4,000 जोन. ऊपर में आपको 4,200 4,250 के टारगेट देखने मिलेंगे. FCons. Okay. Before that, Anuj, one more stock on the radar for the intraday, that is a Chambal fertilizer. We have seen some good action in the fertilizer stock as well. Chambal is trading at the 509 as of now. You can bat the current market price. The stop loss of 503. ऊपर में हमें लग रहा है कि 517 520 के टारगेट आना चाहिए इसमें. NTPC Green bought at IPO. Yeah, before that, you were saying about the AFCONs, right? Correct. Okay, okay. So AFCONs का अगर इसे रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक, राइट, तो डेटा बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं, बट सपोर्ट की बात करूं तो जहां से घूम रहा है पर 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट. और ऊपर में प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हो सब लॉन्ग वीक की कैंडल्स बनी है, सो ऊपर से फॉलो बाइंग नहीं आ रही है, रादर ऊपर से सेलिंग देखने मिल रही है. तो 570 इज द इमीडिएट हर्डल, वहीं से 2-3 बार सेलिंग देखने मिली है एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सीन एट द 500 लेवल. यस अनुज, नेक्स्ट स्टॉक इज एनटीपीसी. NTPC Green bought at IPO. Bought at IPO. ओके, सो आईपीओ पे लिस्ट हुआ था अराउंड 112 के आसपास, देन इट मेड अ हाई अराउंड 155 एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स वी हैव सीन अ गुड करेक्शन टुवर्ड्स 120 जोन, राइट. सो यू कैन कीप, अगर आपने आईपीओ पे बाय किया है तो अभी भी आप इसमें बने रह सकते हो. इफ सपोर्ट के आसपास आता है अराउंड 115, वहां पर आप फिर से फ्रेश बाइस में कर सकते हो. ऊपर फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस यू कैन सी द टारगेट टुवर्ड्स 180 200 जोन. So TTML bought at 100. Before that, one more stock, Anuj, on the radar for the intraday, that is a BASF. Stock is up by more than 7%. A good action seen with the good volumes as well, right? Trading at the 5580 as of now, with a stop loss of 548, stop loss of the 5520. ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 5,600 का टारगेट इसमें आना चाहिए. पांच हजार छह सौ 5,620 का टारगेट इसमें आना चाहिए. अभी 20 पॉइंट का मोमेंटम इसमें आ गया है, 20-25 पॉइंट का, राइट. तो काफी अच्छा वॉल्यूम है और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यू कैन गो फॉर इट. So guys, we have another intraday. We have pinned it. You can check the comment section. Intraday BASF buy at 5580, stop loss 5220, 5520, sorry.
Target 5620. Sir, any CDI considering the upcoming budget? You can keep on the radar fertilizer stocks, right? एक RCF काफी अच्छा लग रहा है. इवन हम चंबल ने हमने इंटरनेट में बात की थी, बट इवन RCF एक देख सकते हो आप, रडार पर रख सकते हो. ट्रेडिंग एट द 182 लेवल. यहाँ से हमें लग रहा है कि 190 तक का मोमेंटम इसमें आना चाहिए. कीपिंग द सपोर्ट अराउंड 170 लेवल. सो वन कैन गो फॉर द RCF. इवन द फैक्ट काफी अच्छा लग रहा है फॉर द बजट, क्योंकि बजट से पहले काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिलता है टुवर्ड्स द फर्टिलाइजर स्टॉक्स. So one can go for the RCF as well. Sir, Irida. So overall setup wise थोड़ा सा वीक ही है अभी भी. ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन देखने मिला, बट द गुड पार्ट की 3-4 वीक से कंसोलिडेशन मोमेंटम में है. द फ्रेश मोमेंटम विल क्रिएट अबाउट 240 लेवल ओनली. सो ट्राई टू बाय वंस इट क्लोज अबाउट 240 ऑन अ डेली चार्ट. 240 के ऊपर ही मोमेंटम क्रिएट होगा. इफ इट क्लोज अबाउट 240, it can go towards 270 280 level on immediate basis. Sir, Tanla, TANLA. This is a monthly chart and better to avoid such kind of structure, right? काफी weak नजर होते हैं यहाँ पे है, right? Stock is in downtrend, so it's better to avoid. अगर मैं support की बात करूँ तो 550 600 is a strong support zone, but as of now कोई recovery के यहाँ पे sign नजर नहीं आ रहे, so better to avoid. Sir, Chambal Fertilizers. इवन फ्यू मिनट बैक हमने इस पे इंट्राडे पे सजेस्ट किया था. सेटअप वाइज काफी अच्छा है यहाँ पर. यू कैन कीप द स्टॉक ऑन द रडार फॉर द इवन लॉन्ग टर्म पर्पस एज वेल, राइट? थोड़ा सा यहाँ एक कंसोलिडेशन में क्लस्टर नजर आ रहा है, टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 550 लेवल. बट अगर ये 550 का लेवल इसको सरपास हो जाता है तो इवन इमीडिएट ऑन 580 600 इसमें देखने मिलेगा. एंड इट हैज अ स्ट्रांग सपोर्ट अराउंड 480 490 जोन. This will be the last query for the day. Indian Hotel 830 put bought at 20. What should be my target? 820 पुट. 830. ओके 830. सो एटीएम स्ट्राइक का ही है, बट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो थोड़ा सा डेली चार्ट पे वीक हुआ है, बट ऑन वीकली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत वीक नहीं है. आफ्टर फॉर्मिंग हेड ऑफ हायर बॉटम फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 वीक्स थोड़ा सा करेक्शन देखने मिला है, राइट? तो टिल इट होल्डिंग 830 820 लेवल, राइट? आप यहाँ पे बने रह सकते हो. नीचे में आपको जो आपने पुट बाय किया है, इट्स प्रॉब्लम है कि इसमें डीके भी हो सकता है. तो थोड़ा सा अगर इसमें मोमेंटम मिलता है तो एग्जिट करे, या तो अगर मोमेंटम नहीं आता है तो बेटर है आप इसमें एग्जिट किया हो बेटर रहेगा. बिकॉज आप देख सकते हो इंडियन होटल में कोई खास बहुत बड़ा मोमेंटम आता नहीं है. स्लो है, स्टेडीली टूट रहा है, तो जो ऑप्शन आपने पुट बाय किया उसमें डीके आपको देखने मिल सकता है, राइट? सो यहीं पे एक सपोर्ट है इसका अराउंड 830 825 के आसपास. अगर ये नीचे तोड़ता है तो थोड़ा सा आपको मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है. So guys, that will be all for today's morning session. We have our Nifty expiry at 2:30 p.m. with Shivangi Sharda. Don't forget to join that. And thank you, Madhur sir. Thank you everyone for joining in. Thank you.